हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CivTech सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। सर्वेइंग एंड लेवलिंग और SSC JE एग्जाम पार्ट 17 में आज हम डिस्कस करेंगे 10 MCQs स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 161 टू 170। आई होप ये वीडियोस आपके लिए एक लर्निंग टूल का काम कर रही होंगी फॉर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द गेट एग्जाम और SSC JE और एनी सॉर्ट ऑफ जॉब इंटरव्यूज और टेस्ट्स। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और CivTech सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन जहां पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू फर्दर ये क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो सर्वेइंग फॉर SSC JE पार्ट 17 क्वेश्चन नंबर 161 टू 170 आज डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 161 says that a method of differential leveling is used in order to find the difference in elevation between 2 points when option A they are too far apart, option B there are obstacles between them, option C the difference in elevation between them is too great, option D all of the above. So all these are the correct option. If the both points are too far then method of differential leveling is used, और अगर कोई दरमियान में ऑब्स्टिकल है फिर भी डिफरेंशियल लेवलिंग होगा। एक लेवल को दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे और फिर वहां से आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे। और अगर डिफरेंस ऑफ एलिवेशन जो है वो भी काफी ज्यादा है, आपकी इक्विपमेंट हाइट से भी ज्यादा हो, उस केस में भी आपने डिफरेंशियल लेवलिंग का मेथड यूज करना है। सो डी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑल ऑफ द above. 162 the culmination method of obtaining the reduced level of points does not provide a check on option A 4 sides, option B back sides, option C change points, option D intermediate sides. So intermediate sides is the correct option, which is option D. The culmination method of obtaining the reduced level of points does not provide a check on intermediate sides. 163 the rise and fall method of obtaining the reduced level of points provides a check on option A 4 side, option B back side, option D intermediate sides, option D all of these. So all of these is the correct option. The rise and fall method of obtaining the reduced levels of points provides a check on all these: 4 sides, back sides and intermediate sides. 164 it is required to find the difference in elevation between 2 points A and B. During leveling it is found that the staff reading at point B is more than staff reading at point A. It indicates that the point A is dash the point B. Option A higher than and option B lower than. Yes, of course point A is higher than because point B के ऊपर जो है वो लेवल काफी ऊपर है। सो इट मींस कि स्टाफ काफी डाउन है, दैट्स व्हाई लेवल काफी हाइट के ऊपर है। सो पॉइंट बी इज डाउन एंड पॉइंट ए इज हायर देन पॉइंट बी। सो ए हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। 165 culmination method is used in option A profile leveling, option B differential leveling, option C check leveling, option D both A and B. So A is the correct option. Culmination method is used in profile leveling. A is the correct option. 166 rise and fall method is used in option A profile leveling, option B differential leveling, option C check leveling, option D none of these. So B and C are the correct option. Rise and fall method जो है वो differential leveling और check leveling दोनों में यूज होता है। 167 the method of leveling in which height of mountains are found by observing the temperature at which water boils is known as option A barometric leveling, option B reciprocal leveling, option C longitudinal leveling, option D hypometry. So D is the correct option. Method of boiling जो है वो hypometry है। D is the correct option. The magnitude of super elevation depends upon the speed of the vehicle and radius of the curve. Option A is correct and option B is incorrect. Yes, super elevation जो है वो roads में curve के अंदर दिया जाता है। So it depends upon the speed of the vehicle and radius of that curve. So A is the correct option. 169 which of the following statement is correct? Option A in leveling the effect of curvature is to decrease the staff reading. Option B the effect of refraction in leveling is to increase the staff reading. Option C the combined effect of curvature and refraction in leveling is to increase the staff reading. All of these. So C is the correct option. Combined effect of curvature and refraction in leveling is to increase the staff reading. 170 in leveling the effect of refraction varies with atmospheric condition. Option A is yes and option B is no. So yes,
Effect of refraction varies with the atmospheric conditions. So A is the correct option. So friends, this was our lecture number 17 on surveying and leveling MCQs video series, जिसमें हमने 10 MCQs आपके साथ शेयर किए. आई होप आपने इनको लर्न किया होगा. इन वीडियोस को मुकम्मल देखिए और अपनी लर्निंग डेवलप कीजिए. मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 18 में, जहां पे फर्दर 10 MCQs आपके साथ शेयर किए जाएंगे. हमारे इस चैनल पे पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के प्रोक्योरमेंट रूल्स काफी डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं. उन वीडियोस को भी लाइक करें. इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस अवेलेबल हैं. सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे फर्दर 10 MCQs आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.